हेलो एवरीवन। आज मैं एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर वेरीटेक। लेट्स गेट इन विद द अनबॉक्सिंग। इट कम्स विद दीज लीफलेट्स जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। इसके प्रॉबेबली वारंटी कार्ड वगैरह भी और डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं। नाउ दिस इज़ द वॉच, दिस इज़ द बॉक्स फॉर दैट वॉच। इसको हम बाद में खोलेंगे एंड देन लेट्स सी द लूप। एंड दिस पर्टिकुलर वॉच इज़ कार्बन फ्री, सो इसमें कोई भी कार्बन बेसिकली नहीं यूज़ किया एप्पल ने इस वॉच को बनाने में। लेट्स गेट इन विद दिस, इट्स टाइम फॉर द अनवील और आई एम proper excited to unbox the watch. Okay, so let's see. So I think this is the USB-C lightning fast cable which is a magnet. और ये है हमारी वॉच। लेट मी फिगर आउट कैसे ओपन करनी है। ओके, सो या it took me some time to figure it out and finally this is how our watch looks like. बहुत ही sleek और बहुत ही मज़े का प्रैक्टिकल सा इसकी शेप है। I really like how it's flat unlike other Apple watches. अब लूप देखते हैं। I ordered this blue color which is sort of a universal color और ये किसी भी किस्म के कपड़ों के साथ कुछ भी आपने पहना हो, स्पोर्ट्स वेयर हो, उस सब के साथ ये सूट करता है। आप you can get different sizes and shapes for the loop. So now I've turned it on, did some settings without putting the loop on और अब मैं finally loop डाल रहा हूँ। It's very easy to install the loop. बस आपने literally इसको दो different sides से insert करना है and it will get attached. And this is how it looks like on my wrist. And I've entered a code too. As compared to Ultra 1, it is faster, brighter, has double storage, and has a double tap test. To discuss the features in details and differences with the Ultra 1, I will upload another video. Stay tuned. Thanks.